Good morning children. Today we will discuss about natural gas. We have seen already coal and petroleum. In petroleum we have seen that lot of substance are obtained from the petroleum like wax, kerosene, petrol, diesel, bitumen and as well as petroleum gas like LPG. Now we will see that natural gas. Along with petroleum, natural gas is also obtained from the under the ground beta, and it is also formed from the fossil fuels. Fossil fuels means, what is the meaning of fossil beta? Fossil means dead and decay of elements and animals and plants. So animals and plants जब dead and decay हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं fossil. So as a fuels, so it is used as a fuel, so it is known as fossil fuel. Fuel हमें मालूम है fuel का क्या यूज होता है बेटा? Running the vehicles and cooking as well. So fuel obtained from the animals and plants is known as fossil fuel. Okay, and it is found the deep under the earth like a petroleum and coal. It is also found from the underground beta. Okay, and it takes million years as well to form. But there is an advantage of natural gas compared to the petrol, diesel. Petrol and diesel produce lot of smoke beta, but fossil fuel like natural gas, it burns clearly and does not produce a smoke. Okay beta, so this is the advantage. So question will ask in the exam, what is the advantage of using CNG or natural gas? Full form of CNG is compressed natural gas, okay, and full form of LPG is liquefied petroleum gas. So natural gas और CNG का advantage क्या है? तो that advantage is it burns clearly beta and without producing any smoke. But we know that petrol and diesel produce lot of smoke, so we can replace petrol and diesel by the natural gas, and it contains mainly methane. Methane, इसके अंदर मीथेन होता है. मीथेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बेटा. ओके, जो बर्निंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है. ओके, नेक्स्ट वन, इट इज सप्लाइड थ्रू द पाइपलाइंस इन द बड़ोदरा सिटी लाइक बड़ोदरा, दिल्ली एंड नाउअडेज और भी सिटीज में इसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बेटा, जिससे पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग एरिया में इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ natural gas that can be transported through the pipelines. It is used as a fuel to run the vehicles beta. We know that lot of vehicles in which petrol and diesel are used, but nowadays buses, automobiles are used in which natural gases are used. It is a cleaner fuel, does not produce smoke, burns clearly. So these are the advantage of natural gas beta, and it is a efficient. Efficient means इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है बेटा, ज़्यादा अमाउंट में हमें इससे एनर्जी ऑब्टेन होगा. Understood? And it is a good fuel. We cannot say that any fuel is ideal fuel beta, because for ideal fuel बहुत सारे क्राइटेरियाज फॉलो होने पड़ते हैं. इजीली अवेलेबल, इजीली हैंडल, चीप. सो इट इज़ ए गुड फ्यूल, वी कैन से दैट, बिकॉज इट इज़ ए स्मोकलेस क्लीनर फ्यूल एंड इजी टू हैंडल, बट इट इज़ नॉट ए चीप. हमको बहुत ज़्यादा सस्ता तो मिलेगा नहीं. वाई? बिकॉज इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल बेटा. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. तो हमारे पास ये अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है लाइक एयर एंड वाटर which are renewable, but these things are not renewable. We can consume it within 100 years, but it will take around millions of years to form beta. Okay, so this is these things about natural gas. Now our lesson is over, but now we will discuss about consequences beta. What are the disadvantages? What are the problem of overuse of coal and petroleum? अगर हम कोल एंड पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करेंगे बेटा तो क्या प्रॉब्लम है? जनरली ओवर यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम causes global warming and air pollution. These gases released from the coal and petroleum are greenhouse gases. Greenhouse gases के बारे में हमें अच्छे से 18th लेसन में बताया जाएगा. So it will create the air pollution as well as global warming.
एंड वी नो दैट कोल माइनिंग जो होती है, जिसके थ्रू हम कोल निकालते हैं बेटा, वहाँ पे भी बहुत सारे गैसेज रिलीज होती है दैट विल हार्मफुल फॉर द human beings as well. So two things are here, two consequences are here. Not only the over extraction but overuse are also a problem, because if you will use rapidly beta without thinking about the future, but within 100 year we can consume it, but next generation के लिए ये अलाउड नहीं, अवेलेबल नहीं होगा. सो वी हैव टू फॉलो अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा. यू हैव लिसन in essence that about sustainable development. What is sustainable development beta? Means we have to use it but in the balancing way, means just use it and fulfill your requirement but don't overuse. Okay beta, and we have to think about future generation as well. So balancing use of natural resources like coal, petroleum, and we have to think about the future, that is the sustainable development. Understood beta? There are lot of consequences like global warming, air pollution, and limited amount means non-renewable, we can say that. So we have to think about it. So we have to follow a conservation process. How can we conserve coal and petroleum beta? How can we conserve? We should use renewable resources as much as possible beta. हम उसमें क्या होगा, वाटर से रिलेटेड यूज करें. सोलर एनर्जी वी कैन यूज फॉर द एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग एंड एज वेल एज टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को मूवमेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. सो वी हैव टू फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड वी हैव टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल बेटा. सो अगर सपोज 100 पीपल्स है एक सिटी में बेटा, तो अगर 100 लोग अपनी खुद की कार से जाएंगे तो कितना यूज होगा, कितना वेस्ट होगा पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी. सो अगर हम ट्रांसपोर्ट फॉलो करेंगे बेटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सपोज बस, तो उसमें अराउंड 50 to 60 पीपल्स कैन सिट. तो वहाँ पे सिर्फ वन टाइम पेट्रोल और डीजल यूज हुआ, 60 टाइम लेस हुआ. सो दीज आर द कंजर्वेशन प्रोसेस जिसको हमें फॉलो करना है, नॉट ओनली फॉर अस एज वेल एज फॉर फ्यूचर जनरेशन. सो ये लेसन हमारा छोटा था बेटा, कोल, पेट्रोलियम एंड सीएनजी. एक बार उसको अच्छे से रीड करो, वर्कबुक कंप्लीट करो. इफ यू हैव एनी डाउट देन इन्फॉर्म मी बेटा. ओके, नेक्स्ट लेसन वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 16, दैट इज लाइट. थैंक यू बेटा.